Yes. Hello, my dear friend. Everyone, tell me, beta, audio and video both are clear to all of you. फर्स्ट थिंग, अगर आप प्रोजेक्ट देखोगे तो ओसी के लिए ऑलरेडी यस बेटा, टेल मी ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब आई थिंक क्लियर होना चाहिए सब कुछ. यस, एवरीवन टेल मी फास्ट यार. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, माय डियर फ्रेंड. Okay, we are going to discuss switch module. Okay, this is really very interesting and important topic of the power electronics. Okay, so everyone tell me fast yaar, audio and video both are clear. Yes beta, tell me audio and video both are clear to all of you. चलिए, thank you. Okay, so start करें बालक, कुछ points. चलिए, so सबसे पहले शुरुआत यहां से करते हैं कि आपका हार्दिक स्वागत है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गेट अड्डा 24/7. जेन्युइन प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो वाकई में बेटा आपके प्रति ओके सारी संवेदनाएं रखता है कि आप किस तरीके से अपनी गेट की जर्नी को आगे बढ़ाएं. भले ही आज हमारे पास लगभग ऑलमोस्ट 1 वीक है, लेकिन इस 1 वीक में भी करने वाले तो कर जाएंगे. ओके, और जो गुजर गए उनकी क्या बात करें. ओके, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा फील किया, थोड़ा सा मुझे ऐसे फीडबैक मिले कि ओनली 80% एडमिट कार्ड आर डाउनलोडेड. ओके, ऑब्वियसली फ्रॉम द गेट एस्पिरेंट्स. तो ये एक बहुत बेकार आंकड़ा है. कम से कम यार फॉर्म भरा है तो एडमिट कार्ड एटलीस्ट डाउनलोड करना चाहिए था. बट क्या वाकई में ये एक ऐसी बात है जो आपको याद दिलानी चाहिए. ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट डाउनलोडिंग योर एडमिट कार्ड देन डेफिनेटली बेटा यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर स्टडी. तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी को ये रिमाइंड कराना चाहिए कि भाई जाके एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लो. तो ये तो कोई मतलब नहीं बनता ना बेटा. ठीक है. यस, टेल मी फास्ट बेटा, ऑल द थिंग्स आर क्लियर. सारे पॉइंट्स क्लियर हैं बेटा टू एवरीवन. हाँ, आई थिंक सो. ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर. एक बार सभी लोग यार शेयर और लाइक करिए. तो यार जैसे मैंने आपको बोला कि यार एडमिट कार्ड जो है वो किसी को ये याद दिलाना कि डाउनलोड करना बॉस, ये तो अच्छी बात नहीं है. ये दर्शाता है कि भैया हमने पढ़ाई नहीं की है, फॉर्म तो बस भर दिया था. ऐसा लगा कि जो है पिताजी की 2-3 दिन की कमाई थोड़ा उड़ाई जाए तो हमने गेट का फॉर्म भर दिया था. बस यही तो है भाई. या तो चलिए उनकी नहीं तो अपनी कमाई, जो भी आपने जिसके थ्रू फॉर्म को फिल किया हो, तो कहीं ना कहीं यार एक जस्टिस तो नहीं हो रहा है इस चीज के साथ. खैर जो भी है, अगर गेट के 80% एडमिट कार्ड डाउनलोड होते हैं तो ये हमारी विफलता है कि हमने बीटेक भी किया है, हमने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है, हमने चीजों को समझा है, बट स्टिल वी आर नॉट सीरियस अबाउट अवर एग्जामिनेशन. बिकॉज भाई हमने इस एग्जाम की जो रेस है उसमें कभी दौड़ने की इच्छा जाहिर ही नहीं की थी. बस फॉर्म भर दिया था, नॉमिनेशन कर लिया था. ठीक है. ओके, तो फिर भी मैं कहूंगा कि अगर अभी भी अंतरात्मा जागे थोड़ी सी तो 6-7 दिन में फॉर्मूले ही रिवाइज करके चले जाओ. अरे 3 घंटे देखो तो जाके, क्या पता किस्मत में कुछ और लिखा हो. ओके, तो कुछ अच्छा हो सकता है बॉस. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्विच मॉड्यूल. ओके, आप देख रहे हैं बहुत सारे डिवाइसेस स्क्रीन पे ऑलरेडी अपीयर हो रहे हैं. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर रियली serious about your GATE 24 or GATE 25 preparation, then please okay, don't provide now any delay kind of. Okay, just do one thing. Okay, open GATE Adda247 on the Google and go to GATE and Engineering section and take paid subscription for EC, electrical, mechanical or civil. For anything my dear friend, you can use my code Y503 for maximum discount and best mentorship. Okay, so देखिए मैं फिर से कह दूं, जितना आप मुझे जानते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, आई हैव नेवर सेड एनी बेटा अनएथिकल थिंग्स या रॉन्ग प्रोमिसेस, ऐसा कभी नहीं किया. आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यार अगर आप शिद्दत से सीरियस होके पढ़ेंगे तो फिर आप कमाल का कुछ करेंगे. ओके, आप हमेशा ध्यान रखिए यार, गौतम घरों में पैदा होते हैं, सिद्धार्थ नहीं. ओके, सिद्धार्थ बनने के लिए आपको थोड़ा भटकना पड़ेगा, थोड़ा उन रास्तों से गुजरना पड़ेगा जहां रास्ते स्मूथ नहीं है, क्योंकि हर विफलता आपको एक हुनर देगी. ओके, तो थोड़ा निकलिए, किताबों के साथ जूझिए
और हर गुजरता हुआ लम्हा आपको कहीं ना कहीं गौतम से सिद्धार्थ बनने में मदद करेगा। अब ये वो भगवान वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको इंजीनियरिंग की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जरूर मिलेगी। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए कि गौतम ही सॉरी सिद्धार्थ ही घर में पैदा होते हैं, गौतम नहीं। ओके, तो गौतम बनने के लिए थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। सो एवरीवन टेल मी बेटा, टिल नाउ द वॉइस और ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो टॉपिक इज नथिंग बट बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं सर? एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया था ऑल अबाउट द डिवाइसेस। नाउ वी वांट टू डिस्कस स्विच मॉड्यूल। सर व्हाट इज दिस स्विच मॉड्यूल यार? बड़ा पढ़ते हैं, कभी कभी मिल जाता है स्विच मॉड्यूल, कभी कुछ लोग स्विचेस बोल देते हैं। सो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस स्विच मॉड्यूल? What is the actual significance of the switch module? We want to understand, my dear friend. Okay, this thing actually we want to understand. So देखते हैं क्या होता है. Sir, before discussing the switch module in the power electronics, first we have to understand, my dear friend, power electronic devices. Okay, switch module or power electronic devices definitely we use to achieve required things from the converter. Okay, sir, which type of requirement we want to fulfill through the power electronic devices or switch module? It is very easy, beta. Okay, let us assume, let us consider someone want to control current or voltages in a circuit in particular fashion. So to control this current and voltage, I repeat, to control this current and voltage, or to transform the given voltage shape or the given current shape into the required shape, or we want to achieve required voltage, required current in some load or element, we require, my dear friend, power electronic devices. Power electronic devices, as you know, are very sensitive, very faster devices. We can turn on, turn off those devices in just microsecond or nanosecond. So delay provided this on and off almost negligible with respect to one cycle of your output. And only due to this reason, power electronic devices are really very popular in comparison to mechanical switches. Definitely, my dear friend, mechanical switch can do the same job, whatever you want to achieve by the power electronic devices. But the problem is that mechanical switches are manually operated. So the turn on time and turn off time will be very large. Okay, let's consider. You want to turn off one device, beta. How much time do you require to turn off any device switch? You may say, sir, around 0.5 second. Okay, 0.5 second. Now see, what is the significance of 0.5 second? It's nothing but, sir, 500 millisecond. What is the fault occurring time in any particular system? Generally in terms of microsecond. तो 500 मिलीसेकंड में तो दुनिया भर की फॉल्ट अकर हो जाएंगी, एंड इवन वी कांट प्रोटेक्ट अवर सिस्टम. सो द इन द रिले, in the protection devices, to transform signal, to transform magnitude, to transform frequency, or for many other type of jobs, we want to use power electronic devices. Reason is very simple, because they are going to turn on and turn off in very small time interval, hardly in nano or microsecond. This is the main beauty of the semiconductor devices in comparison to metal conductors. Okay, so now this is the beauty of the power electronic devices. But sometimes, as you know, that ki yaar sir, power electronic devices are not capable or sufficient to do the job whatever we require through the devices. In those situations, we may require more than one device to fulfill our job. Whenever we require more than one device to fulfill our job, is called switch module. But before understanding the switch module, we have to understand the phenomena, the concept of the power electronic devices.
किस टाइप के सर कंसेप्ट हमें जानने चाहिए पहले से? वो कंसेप्ट है मेरे दोस्त द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स in the practical world we also have to know switching losses as well as conduction losses, switching frequencies and so on. But for the GATE examination point of view, मोटा मोटी आप कह सकते हैं mainly they want to ask question related to VI characteristics of the device. I will tell you about conduction loss, about switching loss, about switching frequency also. But we have to give more and more focus to draw the VI characteristic of the switch module. अगर हम बात करें पिछले 25 इयर्स की गेट की, तो लगभग बेटा 10 से 12, इवन हम बोल सकते हैं कि पिछले 25 सालों में से 15 सालों में आपसे स्विच मॉड्यूल का क्वेश्चन किया गया है, चाहे वो डायरेक्ट वे से हो या फिर इनडायरेक्ट वे से हो। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एक बार बताइए बेटा, यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है टू एवरीवन? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यार लाइक वाइक बिल्कुल नहीं करते हो जी, अरे थोड़ा बहुत लाइक वाइक किया करो, थोड़ा शेयर कर दिया करो, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं सर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अगर बेटा हम इस डिवाइस का नाम बोले तो आप कहेंगे सर दिस इज नथिंग बट फर्स्ट वन वी कैन से बेटा डायोड। ओके, सो व्हाट इज द डायोड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स? थोड़ा सीरियस रहेंगे, एक एक बात को कैरी करेंगे। यही वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि सर इसमें क्या होता है, पॉजिटिव करंट विल अलाउ एंड नेगेटिव वोल्टेज विल ब्लॉक। ओके, सो दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिवाइस। इनको बोलते हैं बेटा क्या, एससीआर। सो एससीआर सिंबल विल लुक लाइक समथिंग दिस वन और दैट वन। सो ये बोथ सिंबल किसके होते हैं, एससीआर के होते हैं। सर व्हाट विल बी द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर? जरा ध्यान समझिए सर, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर, एससीआर इज बाइपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइपोलर? Means it can sustain voltage either positive or negative. It can sustain beta voltage either positive or negative. So the VI characteristic of ideal SCR will look like something. जितना ये वोल्टेज बेटा पॉजिटिव में ब्लॉक कर सकता है, उतना ही लगभग ये नेगेटिव में ब्लॉक कर सकता है। So the VI characteristic of this device will look like this, plus V and minus V. So this is the ideal VI characteristic. You are getting my point? आगे बढ़ते बेटा। नाउ अगर आप जीटीओ के सिंबल देखेंगे बेटा, तो जीटीओ के सिंबल भी दो हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, कुछ लोग दोनों डायरेक्शन में करंट शो करते हैं। सो दिस इज द सिंबल ऑफ योर जीटीओ। नाउ जीटीओ इज सिमेट्रिकल और एनोड शॉर्टेड जीटीओ जनरली वी कंसीडर। सो हियर माय डियर फ्रेंड, द जीटीओ वीआई कैरेक्टरिस्टिक विल लुक लाइक दिस। द जीटीओ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स विल लुक लाइक दिस। इट कैन पास माय डियर फ्रेंड, ओके बहुत ध्यान सुनना, इट कैन पास माय डियर फ्रेंड पॉजिटिव करंट and can block positive voltage, can pass positive current and can block positive voltage. So plus I and plus V is the VI characteristic of GTO SCR diode. Done. अगले पॉइंट समझते हैं, तभी तो हम स्विच मॉड्यूल की बात कर पाएंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तभी तो हम बेटा स्विच मॉड्यूल की बात कर पाएंगे। तो आपको सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए, ठीक है। नाउ अगला पॉइंट बेटा, वी वांट टू डिस्कस VI characteristics of our BJT. So now we know that beta BJT can pass current from current in one direction only. So we can say finally beta here this is unidirectional and unipolar. What is the meaning of unipolar here? Not electrons or holes, means it can block only positive voltage. So the BJT VI characteristics and anode shorted GTO VI characteristic both will be exactly same in ideal case. So see, this is the VI characteristic of my dear friend our BJT. So BJT can block positive voltage and can pass positive current. Now what about the next thing? Next device is my dear friend IGBT. So the VI characteristics of IGBT is almost same, but the difference is that BJT cannot block my dear friend negative voltage, but your IGBT can block. So the schematic diagram of the IGBT shows it. We are having some series diode, okay, like this. So the thing is that our IGBT can block a small negative voltage or considerable negative voltage. That voltage can be 100 volt or 200 volt, and definitely good positive voltage and beta obviously positive current. So actually we want to operate our BJT only in first quadrant to block positive voltage and to pass positive current. But sometimes just keep this point in your mind. Your IGBT can also block negative voltage, whereas BJT really doesn't have that capacity or that capability. Okay.
So IGBT can block negative voltage. So sometimes they can also provide you IGBT can block only positive voltage. So there is no controversy because this negative voltage blocking capacity is really very small in comparison to positive voltage blocking capacity. So IGBT basically we want, or VI characteristic of IGBT basically we can represent by two different fashion. Okay, one is positive voltage, negative voltage and positive current. Just keep this point in your mind. And the second one beta only positive voltage and positive current. Okay, so IGBT having two characteristics we can say here. IGBT having beta two characteristic we can say here. So one characteristic of IGBT I just want to place here. Okay, and another characteristics of IGBT I just want to place here. Okay, so this second characteristics of IGBT will look like this: positive voltage and positive current. So please don't get panic sir कि हम examination में किसको टिक करेंगे. In examination you can give high priority to this positive current and positive voltage and less priority to this positive current and positive negative voltage. But hopefully you are getting my point. They will not create any controversy in the VI characteristic of IGBT. Definitely they will give sufficient hint to tick the VI characteristics, okay, or the correct VI characteristic with respect to IGBT. तो वो कुछ ऐसा आपको देंगे कि आप इनमें से 100% टिक करोगे, and definitely in the single question they will not provide you both VI characteristic. Otherwise it will be controversial question. So according to IEEE paper, BJT cannot block, my dear friend, negative voltage sufficient, but IGBT can block. That's why you know very well IGBT having series diode or MOSFET having anti-parallel body diode. Okay, so this series diode of IGBT is going to be block negative voltage. Hopefully you are getting my point. So this VI characteristic also IGBT, that VI characteristic also IGBT. So IGBT can block, my dear friend, negative voltage as well as positive voltage, positive current and positive voltage. So sometimes you can take this one, sometimes you can take this one, but practically I just want to tell you this VI characteristics is true. Okay, practically it is true because every IGBT having one series diode. Okay, like MOSFET having a parallel diode, anti-parallel or body diode. Hopefully this thing is clear. Everyone tell me beta, all the points are clear. बताइए यार, इतना तो और अब क्या जान दे दें आपको, शेयर और लाइक तो कर ही सकते हो यार. सो प्लीज अगर गेट एग्जामिनेशन में बात करें तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आप क्वेश्चन को देखना और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टिक करना. अगर दोनों VI कैरेक्टरिस्टिक हैं, यू कैन टिक नेगेटिव आल्सो और आपके मार्क्स आपको मिलेंगे. या तो क्वेश्चन में मार्क्स 2 जाएगा या फिर आपको आपके मार्क्स एटलीस्ट मिलेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वी वांट टू अंडरस्टैंड MOSFET. So see, in some situation, what will happen or what they can give you. Okay, so this is the representation of your IGBT. In some situation, my dear friend, your IGBT can be represented like this also. Your IGBT can represent like this also. Your IGBT, they can show you with some series diode. So please keep in mind this entire symbol belongs to IGBT because IGBT having inherently this diode. So this is not external diode. This is the internal diode of the IGBT, similar to MOSFET. Similar to MOSFET. Okay, so I just want to mention this point, my dear friend, here. This is nothing but internal diode of the IGBT. Internal diode of IGBT. Internal diode of IGBT is coming or is going to be appear into the picture because of IGBT structure. So it is not external diode. Hopefully you are getting my point. Everyone tell me beta, all the points are clear? फटाक से चलिए आगे बढ़ते हैं. Next device is nothing but MOSFET. So IGBT VI characteristic, hopefully it's clear. Next device is nothing but beta MOSFET. So IGBT done. Next is whatever number of this device is nothing but beta MOSFET. So MOSFET is nothing but again almost similar to my dear friend BJT because and the term T letter belongs to transistor. Yeah. Okay. So the IGBT characteristics, the BJT characteristic also may be similar to MOSFET characteristics. Okay, we have to observe the drain source and drain source current and drain source voltage VI characteristic. It is almost similar to BJT. See, IGBT, BJT, MOSFET all are having VI characteristic something like this in this fashion. So after some time, if you will increase your voltage, your current will not change. Your current will be almost constant. So that's why, my dear friend, these three devices can also provide you constant current. Okay, doesn't matter how much voltage you are going to be changed across the power terminals. What are the power terminals in MOSFET drain and source, in IGBT collector and emitter, and in BJT collector and emitter?
What is the sir control circuit or control terminal in BJT base, in IGBT gate, in MOSFET gate? Okay, so these terminals basically are called beta control terminals, and main terminals जिनके across हम main power supply को connect करते हैं are called power terminals. Okay, so see the VI characteristic of all three devices with respect to main or power terminals will almost looking like same. Okay, will almost look like same. Now tell me, the things are clear beta to everyone? Yes, फटाक से बोलो बेटा. So please keep in mind, every IGBT having inherently series diode. Similarly, अगर हम MOSFET की बात करें, so every MOSFET sir having inherently body diode. This body diode connection will be anti-parallel to this MOSFET. तो पहला point, sir, MOSFET having this diode. Okay, it is the internal diode similar to IGBT. This is the internal diode. Now, my dear friend, here we are having this is internal diode. What is this? Internal diode is called in the technical language body diode. So, body diode always connected in anti-parallel of the MOSFET. Now, see, next beauty. So, this diode definitely will conduct in upward direction. What about this MOSFET? MOSFET current is also showing like this. So, this current will always flow in upward direction. No, my dear friend. See, in the MOSFET, whatever this direction is given is not the current direction, is the electron direction. So first, we have to keep this point in our mind. This is the electron direction. So obviously, current will flow in the opposite direction of electrons. So if electrons are moving towards electrons are moving beta to upwards. So definitely current will flow in the downward. So useful current, my dear friend, in this case will pass in this fashion. Okay. So the current or whatever current will flow through the body of MOSFET will flow in downward direction, and this beta diode will conduct in upward direction. So like this. Okay, try to understand here. In this case, we can say somewhere here beta we are having this source, and somewhere here we are saying beta this is source, this one is drain, this one is gate. So see properly, when you just trigger your gate, if you apply some positive voltage across drain and source, so current through the MOSFET will pass in this downward direction, drain to source. If you are applying some negative voltage across drain and source, in other words, your source voltage is higher than the drain voltage, then my dear friend, this body diode of the MOSFET will come into conduction. Okay, so due to this reason, current will flow in opposite direction. So negative voltage, this particular arrangement cannot block, because diode is there, so diode definitely uncontrolled device, and the moment at which diode voltage will be just positive or just greater than current voltage, your diode will come into conduction. So due to this reason, we can say MOSFET will have beta current in both direction, but voltage in only single direction. Okay, so what will be the VI characteristic of this particular MOSFET? So MOSFET VI characteristic, my dear friend, will look like something. Okay, it will be bidirectional and unipolar. So the MOSFET VI characteristic will look like this: plus and minus I and plus V. Hopefully you are getting my point. So this is nothing but beta plus I, minus I and plus V. I think you are getting my point. So this is the VI characteristics of our MOSFET. Now tell me, all the points are clear beta? सभी लोग बोलते रहे, all the points are clear यार. कोई डाउट किसी को कहीं? कोई डाउट किसी को कहीं? Everyone tell me fast यार. Do you have any doubt? शेयर और लाइक करें यार अब सभी लोग. शेयर और लाइक करते रहे बेटा सभी लोग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो सर इतनी बात क्लियर हो गई कि द डायोड VI characteristic will look like this one, the SCR VI characteristic will be this one, the GTO characteristic will be this one, anode shorted GTO. Next, sir, IGBT will be this one. IGBT will have two different type of characteristics depend upon the question, and this IGBT also having two symbol. One is this one, another with internal series diode. And what about the MOSFET? MOSFET again, beta, we are having two symbol. Okay, sometimes they will not show you a body diode, but definitely you have to consider. Okay, sometimes beta they will show you body diode. So it depends upon the professor. Okay, but definitely in both cases the VI characteristic will be this one. The MOSFET will be bidirectional and unipolar device. So here unipolar means it can block voltage of one polarity. Okay, so MOSFET can block positive voltage, and this IGBT can block positive voltage as well as a small negative voltage, but small but considerable. Okay, so I think all the points are clear. एक बार बताइए बेटा, यहाँ तक सारे points clear हैं? Now, I just want to put next point in front of you. So, we want to consider, my dear friend, in this situation, next device is DIAC. Okay. So, what is the name of this device? Is nothing but, sir, DIAC. DIAC is especially very useful in the AC converters. Okay. But the problem with the DIAC is nothing but it cannot block good
positive or negative voltages. It can block very low amount of voltages in positive and negative. So generally it is not feasible device in the AC to AC converter in the domestic field, because in India we are having 230 voltage RMS value. So peak voltage will be 230 root 2, 325 volts. Our dike cannot sustain. Dike generally can sustain not more than 30 volt, 50 volt, 100 volt hardly. Okay. If we are going to design a very good quality of dike, then कोशिश कर सकते हैं 500 volt of 300 volts की. But generally we don't want to design such type of dike because uneconomical process. Okay, but definitely if we want to consider beta the ideal VI characteristic of dike, then it will look like something. So अगर एग्जामिनेशन में डाइक की कोई बात कर दे तो डाइक के केस में आपको सिंपली ये ध्यान रखना है सर, इट कैन ब्लॉक पॉजिटिव वोल्टेज एज वेल एज इट कैन ब्लॉक नेगेटिव वोल्टेज, इट कैन पास पॉजिटिव करंट एज वेल एज इट कैन पास नेगेटिव करंट. सी हियर वी आर हैविंग टू कनेक्शन ऑफ एंटी-पैरेलल डायोड्स. Listen to me carefully, my dear friend. We are having anti-parallel connection of two diodes. So when this voltage is higher than that, current will flow in this fashion. If this voltage is higher than this, then current will flow in this fashion. If we don't have breakdown of the junction of the diodes, okay, whatever we are using here, then definitely diode will be capable to block that voltage whatever we are applying across the terminals of the diode. Okay, so what we can say, if the breakdown occurs, then definitely current will flow. If breakdown does not occurring, then definitely no breakdown, or breakdown is not occurring, so definitely no current. Okay, so here beta it can block a voltage generally very less, 200 volt, 100 volt, 500 volt, 30 volt like this, and similarly in negative also. Okay, what about next point here? Next point is nothing but if breakdown occurs in the positive region, then diode will conduct in this direction. If breakdown occurs in this region, then diode will pass current in opposite direction. So the VI characteristic of the diode in ideal case will be absolutely similar to trike. Okay, so this is the VI characteristic of diode. So we can write minus V plus I and minus I. Now what is the name of this device? So the name of this device is like this: MT1, MT2, similarly here MT1, MT2, and this is called the gate. Okay, the name of this device, we know that is nothing but trike. So trike we can trigger by either positive pulse, by negative pulse, and the VI characteristic of trike will be absolutely similar to diode. Why? Because my dear friend, trike can block positive voltage and without triggering you can't turn on. It can also block negative voltage, without triggering it will not come into conduction. What is the major difference, sir, in between diode and trike? Yeah, diode is fully uncontrolled device. You will have breakdown once you will cross the breakdown limit. Here, no, my dear friend. Before that, also you can trigger your device. So your trike can block a very high voltage in terms of 3 kV, 2 kV. Okay, but a diode can't achieve this job. Another beauty, wherever you want, you can trigger your trike, but in diode it is not possible. Fully uncontrolled, fully we can say semi-controlled kind of, because with the help of negative gate current we cannot turn off trike. Even sometimes we don't require force commutation for the trike because natural commutation is present. Whenever we want to control voltage with the help of trike, natural commutation will be there. But whenever we want to control frequency, we have to apply, my dear friend, force commutation. So see, first thing, trike having same VI characteristic as our diode having. Okay, but here two types commutation are available. First commutation, natural commutation. Second one is beta force commutation. So both commutation we can provide for trike. Okay, for trike. Hopefully you are getting my point. It is clear beta to everyone. बोलते रहे, it is clear to everyone. सर एससीआर में भी क्या नेचुरल और फोर्स दोनों होते हैं? यस, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें. We cannot or we do not want to use trike in AC to DC converters, but SCRs beta we want to use in AC to DC converter, in DC to DC converter, in DC to AC converters. In the DC to DC converter, in the DC to AC converter, जब भी हम SCR यूज करते हैं, the turn on time and turn off time, the turn on time and turn off time must be very low. But in AC to DC converter, this turn on turn off time can be higher also. So AC to DC converter SCRs are lower frequencies, and DC to DC, DC to AC SCRs are higher frequencies. Okay, so see here we require force commutation sometimes, but in the AC to DC converter we always require natural commutation.
But in TRIC, we always use in AC to AC. So sometimes natural commutation will be available, sometimes will not be available. तो SCR के लिए फोर्स कम्यूटेशन कहां पे होगा? इन इन्वर्टर एंड इन चॉपर. और एसी टू एसी कन्वर्टर में ट्राइक के लिए फोर्स कम्यूटेशन की नीड कब होगी? स्पेशली व्हेन वी वांट टू कंट्रोल फ्रीक्वेंसी. व्हेन वी वांट टू कंट्रोल वोल्टेज इन जनरल वी डोंट रिक्वायर force commutation. Natural commutation will be helpful for this thing. So cycloconverter basically is the part of force commutation in the trike. Please keep this point in your mind. Okay. Now beta tell me all the points are clear again. Everyone बोलते रहे. अरे यार आप बोल ही नहीं रहे हो. So hopefully this thing is clear. And this last device is nothing but beta Schottky diode. This last device is nothing but beta Schottky diode. Okay. So what is the VI characteristic of Schottky diode? It is again similar to our general diode. So sir, what is the difference in between general diode and Schottky diode, or power diode and Schottky diode? It's very simple. Schottky diode very useful at low power rating, whereas power diode are really very useful at higher power rating. So Schottky diodes will give us a very, very low conduction loss, majority charge carrier device. So we can say high switching frequency device. Due to this reason, sometimes in place of power diode or general diode, we want to give a preference to the Schottky diode. Okay. So Schottky diode actually the important part of your power turns converter. Sometimes we also want to use Schottky diode in the switching controlling scheme, okay, or at the time of triggering our devices. Okay, ठीक है. तो Schottky diode की सर VI characteristic कैसी होगी? Schottky diode in ideal beta way, Schottky diode characteristics will be this one. Okay, in ideal case, okay, Schottky diode characteristic will look like something. It can block negative voltage, it can pass positive current, similar to general diode. But the problem practically अगर हम लोग समझे इस बात को तो ऐसे कह सकते हैं, sir, the negative voltage blocking capacity is really very small. Okay. And obviously this positive carrying capacity is also very small. So this is minus V, in ideal case plus V, but practically we are having lot of differences between power diode and general diode. I think these points are clear. So ये हो गई बेटा VI characteristic of power electronic devices. एक बार सारी VI characteristic एक बार देख लीजिए. ये पूरी की पूरी PDF आपके लेक्चर के नीचे पिन रहेगी. ओके, तो जैसे ही लेक्चर खत्म होता है आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. सो दीज आर द सिंपल ओके वीआई कैरेक्टरिस्टिक. बहुत कुछ मैंने बताने की कोशिश की है अबाउट स्पेशली आईजीबीटी एंड मॉसफेट, इनको ध्यान रखिएगा. एंड दिस इज नथिंग बट Schottky डायोड, ट्राइक एंड डाइक. तो सभी पॉइंट्स को आप कैरी करिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बॉस. नाउ टेल मी ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर यार. सभी लोग यार एक बार बोलेंगे जितने लोग भी प्रेजेंट हैं जितने लोग भी प्रेजेंट हैं. नाउ बेटा नेक्स्ट पॉइंट बेटा वी वांट टू डिस्कस स्विच मॉड्यूल. नेक्स्ट पॉइंट बेटा वी वांट टू डिस्कस स्विच मॉड्यूल. तो एक बार आप पढ़िए स्विच मॉड्यूल, फिर मैं बोलना शुरू करता हूं. ठीक है, फिर मैं बोलना शुरू करता हूं. जी बेटा कुछ क्लियर हुआ यार? आप लोग शेयर और लाइक ही नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है क्या पढ़ना? माना कि टाइम कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है यार.
स्पीड देख रहे हो भाई की, ऐसी स्पीड है जिसमें एक एवरेज बच्चा भी बहुत कुछ सीख सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ाएं स्टोरी को बेटा। आवाज वगैरह क्लियर है, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? यस बेटा, टेल मी फास्ट। ठीक है, सो क्या होता है सर, समटाइम्स सिंगल डिवाइस और स्विच is this definition is designed by me. So sometimes single device or switch beta is not capable to fulfill converter requirements in terms of current carrying and voltage blocking capacity. So beta, therefore to achieve converter requirements we may require series and parallel combination of more than one device, and this is called switch module. Hopefully this definition is clear to everyone. क्या मतलब है कि कभी कभी सर एक डिवाइस अपने वोल्टेज और करंट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में हम एक से ज्यादा डिवाइसेस सीरीज या पैरेलल या सीरीज पैरेलल में अरेंज करते हैं, एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस इज कॉल्ड स्विच मॉड्यूल. Switch module, my dear friend, may have same devices, may have different devices. Okay, so let us consider if you are having two SCR in series to boost the voltage blocking capacity, obviously not current because series connection is there, we can say this is the switch module. If we are using two MOSFET in parallel, we can easily, my dear friend, maintain high amount of current. Okay, but obviously voltage is not going to be changed. Sometimes we want to increase voltage rating as well as current rating, so we may require series and parallel both combinations. Okay, for example, see here, let us consider, my dear friend, we are having somewhere here the supply voltage is just I want to say beta 10 kV sine, or I just want to write like this, 10,000, okay, sine 3140. Okay, and this voltage, my dear friend, we want to apply across one resistive load. Okay, we are having one SCR in this fashion, and that SCR voltage rating is just I just want to say you beta 4 kV. Okay, the SCR voltage rating is 4 kV. So how many SCRs actually we require to sustain this voltage? Definitely more than 2. Okay, so here we have to connect 3 SCR in this fashion. Okay, now this combination of all 3 SCRs is called beta switch module. इतनी बात क्लियर है बेटा? Switch module, इतनी बात क्लियर है? Hopefully you are getting my point. Till now the points are clear. Now अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं कि सर sometimes let us consider we require high current rating. Okay, so see here, let us consider we want to allow beta 4000 ampere current, okay, through one load, like in this fashion, through one load. Okay, but to in controlling way, so what we can do beta, we can use let us consider one BJT here, okay, like this, one BJT here like this, another BJT in this fashion beta we can also consider like this. Okay, and one more BJT we can consider in this fashion according to the rating of the BJTs. So let us consider beta one BJT can carry 1500 ampere current, so definitely to pass or allow 4000 current we require 3 BJTs in parallel. Now in this way you can control your current, or you can pass your current. So definitely to increase the rating of the current, or to increase the value of the current passing through the system, or to increase the voltage blocking by the devices, if you want to maintain somewhat high voltage or current, we may require beta series and parallel combination. So such type of arrangement is called switch module. So switch module we can design with the help of same devices, or we can design with the help of different devices. Okay, but the most important thing behind the switch module is nothing but beta, whatever devices we are selecting for the series and parallel combination, the devices frequencies must be the almost same, और ये कह सकते हैं practically very close और theoretically absolutely same. Okay, so at the time of designing switch module, the most important parameter is nothing but switching frequency of the devices. तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा करता है कि which one will be the most important parameter to design switch module, then your first choice must be, my dear friend, switching frequency, because this switching frequency is going to be decide the turn on time and the turn off time. Okay, for example, my dear friend, if we want to design one system in this way कि हमें बेटा block करना है some positive high voltage. Okay, so for that beta I have considered one BJT in this fashion. Okay, and another device is nothing but I just want to say beta MOSFET is here.
Okay, so this is nothing but beta MOSFET. Okay, now let us consider we are having some load here, and this is the voltage supply. I just want to say, my dear friend, 5000, okay, sine omega t. So this is nothing but 5000 DC volt. I just want to say 5000 DC volt. Okay, but the BJT can block hardly, I just want to say, beta 3 kV voltage, and this MOSFET also can block roughly 3 kV voltage. So to increase the voltage limit with respect to blocking capacity, we have used two different devices, BJT and MOSFET. But what is the problem, yaar? MOSFET, my dear friend, is majority charge carrier device and BJT is minority charge carrier device. And obviously BJT voltage and current rating will be higher than MOSFET voltage and current rating, because BJT are suitable for the moderate power rating converters and MOSFET are suitable for low power rating converters. तो चलो एक बात हम वोल्टेज और करंट से कंप्रोमाइज कर भी ले, बट अबाउट टर्निंग ऑन टर्निंग ऑफ टाइम, मॉसफेट हार्डली रिक्वायर बेटा टर्न ऑन टाइम फ्यू नैनो सेकेंड और टर्न ऑफ टाइम फ्यू नैनो सेकेंड, वेयर एज बीजेटी विल रिक्वायर द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकेंड. तो इनका कभी सिंक्रोनाइज प्रॉपर वे में नहीं होगा. जैसे आप डांस स्टेप देखो कि बीजेटी और मॉसफेट को एक प्लेटफॉर्म पे एक ही सॉन्ग के लिए डांस करना है ना, कभी कभी आपने देखा होगा जो बैकग्राउंड में डांसर होते हैं वो सेम स्टेप लेते हैं विदाउट एनी डिले. ओके, ऐसा नहीं लगता है कि यार 10-20 भटक गए, वो अलग डांस स्टेप ले रहे हैं, 10-20 अलग ले रहे हैं, ऐसा नहीं. तो अगर हम इनको कहें कि तुम डांस करो, तो पता चला ये एक कोई ठुमका लिया, ये थोड़ी देर बाद लिया, या ये ले लिया, ये थोड़ी देर बाद लिया. इस टाइप की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. ओके, तो ये होगा बहुत जल्दी ऑन, ये तब तक ऑन ही नहीं हो पाएगा, अगेन वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम. और ये जब ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ नहीं हो पाएगा, फिर से प्रॉब्लम आई. So due to all those things, beta, converter will face many drawbacks. Okay, to overcome such type of drawback, we can simply do this thing. Either we have to introduce both MOSFET or we have to introduce both BJT. Okay, that will be the good job. So always try to consider either minority charge carrier combination or majority charge carrier combination. For example, I just want to ask a question to all of you. Okay, what is this question? Try to understand. The question is simple, this one. Okay. Which one will be the most suitable switch module to design our one converter? किसी ने ये पूछा. Okay, so question is nothing but beta, what is most economical, what is most economical switch module, sorry, what is the most economical beta switch module? Okay, ऐसे लिख दिया switch module most economical, और आपको चार ऑप्शन दे दिए. A option is something like this, BJT in series with MOSFET, a BJT in series with MOSFET, एक ये ऑप्शन दे दिया. B ऑप्शन दिया बेटा एक MOSFET, okay, एक MOSFET in series with IGBT, a MOSFET in series with IGBT. एक बी के बाद सी ऑप्शन दिया बेटा आपको बीजेटी एंड बीजेटी. ओके, लाइक दिस, बीजेटी एंड बीजेटी. और एक ऑप्शन और आपको दिया सी के बाद डी ऑप्शन, वी आर हैविंग वन बीजेटी इन दिस फैशन एंड वन डायोड, और आई जस्ट वांट टू से बेटा वन जीटीओ. ओके, वन जीटीओ इन दिस वे, वन जीटीओ इन दिस वे. So these are the switch module. Now अब आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? सर ध्यान से समझो. This is the some series combination. Here BJT GTO different frequency. BJT may be same frequency. MOSFET IGBT different frequency. BJT MOSFET different frequency. So out of these four, the most suitable combination is this one due to switching frequency. Now tell me the things are clear. सभी लोग बोलते रहे बेटा. Now tell me the things are clear. ओके, तो अगर गेट एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि विच वन विल बी द मोस्ट सुटेबल स्विच मॉड्यूल, तो फिर आपको फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर सबसे पहले रखना पड़ेगा. और इसके साथ साथ में अगर वो ये दे देते हैं कि दे वांट टू ब्लॉक पॉजिटिव नेगेटिव बोथ वोल्टेजेस और वांट टू अलाउ पॉजिटिव करंट, तो कौन सा सुटेबल होगा, तो फिर उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक किसी स्विच मॉड्यूल की क्या कह रही है. सो नाउ ऑन दिस बेस द स्विच मॉड्यूल आर गोइंग टू बी डिवाइड इन टू डिफरेंट वे, सीरीज एंड पैरेलल. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल you how many types switch module we want to basically design in the practical way. Okay, तो उसके लिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं and I just want to tell you this thing. Okay, so types of switch module, please mind it, types of switch module. तो कितने प्रकार के स्विच मॉड्यूल होते हैं? सर 4 प्रकार के होते हैं. यूनिपोलर यूनिडायरेक्शनल स्विच मॉड्यूल, यूनिपोलर बाइडायरेक्शनल स्विच मॉड्यूल, बाइपोलर यूनिडायरेक्शनल स्विच मॉड्यूल एंड बेटा बाइपोलर बाइडायरेक्शनल स्विच मॉड्यूल. क्लियर है? बोलो तो यार,
बोल ही नहीं रहे हो बालक आप लोग यार, थोड़ा सा भी बोलेंगे तो ठीक लगेगा। और शेयर और लाइक तो कर ही सकते हो, कम से कम कुछ ना कुछ तो करिए बॉस। खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं स्टॉप नहीं कर सकता हूं किसी भी कॉस्ट पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेटा रिकॉर्डेड फैशन में देखते हैं। तो पहला पॉइंट मैं आपके साथ उठा के लाता हूं यहां पे, फर्स्ट पॉइंट। ओके, सो व्हाट इज दिस सर? यूनिपोलर यूनिडायरेक्शनल मींस सर वी कैन ब्लॉक वोल्टेज ऑफ वन पोलैरिटी एंड करंट इन वन डायरेक्शन। तो यूनिपोलर और यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है मेरे दोस्त कि सर हम एक वोल्टेज को ब्लॉक करेंगे और एक वोल्टेज को नहीं ब्लॉक कर पाएंगे। ओके, तो जैसे यूनिपोलर यूनिडायरेक्शनल ये भी है सर बेटा। अगर हम ऐसे कहें, देखो ये पॉजिटिव करंट, ये पॉजिटिव वोल्टेज, ध्यान समझना, दिस इज नथिंग बट बेटा जी यूनिपोलर यूनिडायरेक्शनल इज द वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी अगर हम बात करें बेटा, सो वी कैन राइट हियर नेक्स्ट वन, सॉरी नेक्स्ट VI करेक्टरिस्टिक वी कैन राइट हियर। बी जो पॉसिबल है फॉर यूनिपोलर एंड यूनि डायरेक्शनल के लिए वो ये है कि नेगेटिव वोल्टेज हो, पॉजिटिव करंट हो। ये भी किस श्रेणी में आएगा? यूनिपोलर यूनिडायरेक्शनल की ही श्रेणी में आएगा। बस फर्क ये हो गया बेटा कि यहां पॉजिटिव करंट है दोनों में, लेकिन यहां पॉजिटिव वोल्टेज, यहां नेगेटिव वोल्टेज है। एक बंदा उठा उसने कि नहीं सर, एक मान लीजिए कोई बंदा क्या इसको भी यूनिपोलर यूनिडायरेक्शनल बोल सकता है? फॉर एग्जांपल समवन वांट टू ड्रॉ इन दिस फैशन कि नेगेटिव करंट एंड पॉजिटिव वोल्टेज। यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज आल्सो यूनिडायरेक्शनल एंड यूनिपोलर। ओके, सो जैसे -I + V कर दिया या किसी ने और कुछ कर दिया, बट इतना ध्यान रखो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं है, लाइक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बट डेफिनेटली यूजफुल करंट विल फ्लो ओनली इन सिंगल डायरेक्शन। यूजफुल वोल्टेज विल ब्लॉक आइदर बाय वन पोलैरिटी, ओके, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों नहीं। तो देखो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल स्विच का। इतनी बात भी क्लियर है बेटा यूनिपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल का। तो ऐसे कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं आप, जैसे एक ऑप्शन और मैं लेता हूं, सी के बाद डी ले लेते हैं कि सर कोई बंदा क्या हमसे यह बोल सकता है कि सर नेगेटिव वोल्टेज और नेगेटिव करंट, नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव करंट, हाँ बेटा ये भी है। ये भी क्या है? यूनिपोलर यूनिडायरेक्शनल है। ये भी क्या है? यूनिपोलर यूनिडायरेक्शनल है। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय डियर फ्रेंड यूनिपोलर यूनिडायरेक्शनल स्विच मॉड्यूल, यूनिपोलर यूनिडायरेक्शनल स्विच मॉड्यूल। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब बताओ बेटा क्लियर है टू एवरीवन? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। गजब है ना, आप लोग बिल्कुल नहीं सुनते हो ना रिप्लाई करते हो। हालांकि मैं टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि टाइम कीमती है आपके लिए। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा, यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शनल। यूनिपोलर बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है सर? ऐसे ही समझ लो, यूनिपोलर मतलब सर ये एक वोल्टेज ब्लॉक करेगा, बाई डायरेक्शनल करंट दोनों दिशाओं में फ्लो हो सकती है। कौन सी करंट? यूजफुल करंट। ऐसा नहीं एक यूजफुल एक अनवांटेड, अनवांटेड नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट यूजफुल करंट। ओके सो सी बेटा, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेज हो सकते हैं बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट दोस थिंग्स। देखते हैं क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे बेटा बाई डायरेक्शनल, तो दोनों में बाई डायरेक्शनल सभी में ड्रॉ कर लो, बाई डायरेक्शनल सभी में ड्रॉ कर लो। ये बाई डायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल, सॉरी ये बाई डायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल। ओके लेकिन सर वोल्टेज तो एक ही है, तो वोल्टेज या तो हम पॉजिटिव कह सकते हैं या हम नेगेटिव कह सकते हैं, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। तो इस तीसरे वाले को हटा देते हैं, यानी कि दो ही पॉसिबिलिटी होंगी अपने पास बेटा, बाई डायरेक्शनल और यूनिपोलर में +I - I + V, या फिर बेटा +I - I - V। ओनली दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर माय डियर फ्रेंड बाई डायरेक्शनल एंड यूनिपोलर। अगर हम थर्ड केस में आए तो थर्ड केस स्विच मॉड्यूल का क्या होगा बेटा, जरा समझिएगा। बाइपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल, इसके लिए भी देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाइपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल, इसके लिए सर हो सकती है, देखो +V - V तो कंफर्म है क्योंकि दोनों वोल्टेज ब्लॉक होने चाहिए, +V - V कंफर्म है। अब करंट यूनिडायरेक्शनल, तो या तो करंट ऐसे फ्लो होगी या करंट ऐसे फ्लो होगी, तो दो ही रिप्रेजेंटेशन इसके हो सकते हैं। तो वी कैन से बेटा -V + V + I, या फिर -V + V एंड -I, दिस इज द पॉसिबिलिटी ओनली। नेक्स्ट आता है बेटा बाइपोलर एंड बाई डायरेक्शनल। इसकी तो एक ही पॉसिबिलिटी है और वो क्या है बेटा, सर समझ गए, वोल्टेज दोनों दिशाओं में, करंट भी दोनों दिशाओं में। ओके सो वी कैन राइट बेटा -V + V एंड +I एंड -I। So these are the type of switch module. Okay, starting से देखो बेटा, first switch module unipolar unidirectional, something like this.
Second, unipolar bidirectional will block only one voltage, either positive or negative, but current will flow in both direction. Next beta, bipolar unidirectional means it is capable to block voltage of either polarity positive or negative, okay, or both, we can say like this, and current will pass in single direction. Now beta, here you can easily understand bipolar bidirectional. Now we want to understand next beauty of the statements. See here beta, unidirectional and unipolar switch cannot operate like a, I repeat, unidirectional switch cannot operate like bidirectional unipolar, bipolar unidirectional, bipolar bidirectional. So unipolar unidirectional switch cannot operate bidirectional unipolar, bipolar unidirectional, bipolar bidirectional. Next thing here, unipolar bidirectional switch, definitely unipolar cannot operate like a bipolar, okay, but bidirectional can be operate like a unidirectional. So it depends upon us whether we want to pass current only in the positive direction or only in the second direction or in both direction. So here we are having one choice. In other words beta, unipolar bidirectional switch can operate like a unipolar unidirectional. Okay, next point, bipolar unidirectional can block voltage either positive, negative or both, can block voltage either positive or negative both. So it depends upon us here. If we want to block only positive voltage, feasible. If we want to block only negative voltage, again feasible. If we want to block both voltages, again. But this bipolar unidirectional switch module cannot work as a bidirectional. So my dear friend, bipolar unidirectional also can work or operate as a unipolar unidirectional. Next point, bipolar bidirectional. They can operate like anyone. They can operate like unipolar unidirectional. Whatever current or voltage you require, you can achieve. They can also operate like bidirectional unipolar. If you require positive negative current, positive voltage, yes, we can achieve. If you require positive current, negative voltage, yes, we can achieve. So bipolar bidirectional switches can operate like anything. Unidirectional unipolar, unipolar bidirectional, unidirectional bipolar. Okay, so most popular switches. But the thing is that if we want to design unipolar unidirectional converter, then no need to use bipolar bidirectional switches, because sometimes unwanted current can also take place in the converter. Another thing, the cost of the system will increase. Okay, so many points we are having at this moment. इतनी बात क्लियर है बेटा to everyone? एक बार फटाक से बताइए. Till now all the points are clear. Now my dear friend, we want to discuss series and parallel connection of the switch module. Okay, series and parallel connection of the switch module, because in general we are having beta series and parallel connection. एक बार series parallel आ गया तो series parallel hybrid version you can easily identify. तो जैसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. So let us consider beta one example of this series. Okay, so see, I just want to give you beta this example in this fashion. We are having one BJT in this way and one series diode here. Okay, so this is the BJT. I just want to ask you beta, here we are having one voltage. I just want to tell you 1000 sine omega t, 1000 sine omega t, where omega is equal to 2 pi f and f is equal to 50 hertz is the supply. F equal to 50 hertz is the supply. So you are having, my dear friend, one BJT and series diode combination. Okay, this beta arrangement is called switch module. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं स्विच मॉड्यूल, SM. इसको मैं कुछ टर्मिनल नाम दे देता हूं 1, इसको नाम देते हैं 2. ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू आस्क यू, उस पे क्वेश्चन करते हैं. So let us consider beta the switch module is going to be operated by 1000 sine omega t, where frequency is equal to 50 hertz. Now my first question raising here, what will be the reading of voltmeter V1 and voltmeter beta V2? What will be the reading of voltmeter V1 and V2? तो क्वेश्चन है reading of voltmeter
रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर्स V1 and V2, V1 and V2, V1 and V2 in the range of beta 0 to pi radian, 0 to pi radian if switch is off, if current through the switch module is 0 एम्पियर। तो आपको रीडिंग बतानी है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, ऑप्शन ऐसे हैं बेटा 500 वोल्ट, ऑप्शन ऐसे है बेटा V1 एंड V2, इसको ऐसे बना देते हैं। सो V1 एंड V2 यहां लिख देता हूं मैं 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। ओके, यहां लिख देता हूं 500 वोल्ट माइनस 500 वोल्ट, यहां लिख देते हैं माइनस 500 वोल्ट एंड प्लस 500 वोल्ट। ओके, और लास्ट ऑप्शन लिख देते हैं 1000 वोल्ट्स, ओके, एंड ऑलमोस्ट 0 वोल्ट। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये एक क्वेश्चन रेडी हो गया आपके लिए। ऐसे एक क्वेश्चन और सेकंड पार्ट है इसका बेटा, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर्स फॉर दिस क्वेश्चन ओनली यू हैव टू टेल व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बेटा V1 and V2 but in the range of pi to 2 pi, but in the range of beta pi to 2 pi, so pi to 2 pi you have to tell all those things। तो पहला पार्ट आपको ये करना है, दूसरा पार्ट ये करना है। ओके, so this is the way। now here I just want to write beta minus 500 okay, plus 500 minus 500 and here beta I just want to change 0 volt and 1000 volts। चलिए बताइए रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर्स V1 एंड V2 बोथ। तो ये रहा क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल को यहां उठा लाते हैं। एग्जाम्पल, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल। ओके, चलिए स्टार्ट करिए एंड टेल मी द फाइनल आंसर, टेल मी द फाइनल आंसर। बहुत आराम से खेलिएगा बेटा। एक स्विच मॉड्यूल है जिसमें अपने पास बीजेटी है, डायोड है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, वी आर अप्लाइंग 1000 sin ओमेगा टी वोल्ट्स अक्रॉस दिस 1 and 2 टर्मिनल्स। तो ये पूछ रहा है बंदा आपसे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर्स V1 and V2 इन द रेंज ऑफ 0 to pi will be if I equal to 0 will be। okay, similarly beta reading of voltmeters V1 and V2 in the range of pi to 2 pi if current equal to 0, this one। so ये कुछ ऑप्शंस हैं, everyone please tell me fast the correct option can be। जल्दी से बोलिए। कोई ऑप्शन नहीं आया आपकी साइड से? कुछ तो बोलते बालक। यस बेटा, कुछ तो बोलते यार, कोई तो आंसर आता आपकी साइड से। चैट ऑन ही नहीं है क्या मेरी? मैं ही देख लेता हूं। चैट ऑन है क्या मेरी बेटा? कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। यस, टेल मी फास्ट यार। देखो क्या है, एक बीजेटी और एक डायोड सीरीज में लगे हुए हैं और इसके थ्रू करंट 0 है, बट वी आर अप्लाइंग बेटा 1000 sin ओमेगा टी वोल्ट्स। तो यहां पे बोला गया पीक वैल्यूज ही आपको रीड करनी है। रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर्स बेटा V1 and V2 in the range of 0 to pi if current equal to 0। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर्स V1 and V2 in the range of pi to 2 pi if options we are having this one। ओके गुड, एक आंसर आया है एसपी का सर, फर्स्ट का डी, वेरी नाइस। हो गया बेटा।
फर्स्ट का करेक्ट आंसर इज नथिंग बट बेटा डी, और सेकंड का करेक्ट आंसर इज ऑल्सो डी। ओके, सेकंड का ऑल्सो डी। बस यही खूबसूरती तो आपको समझनी थी। ओके, चलिए, तो हम बात कर रहे थे बेटा सीरीज कनेक्शन ऑफ स्विचेस की। सीरीज कनेक्शन ऑफ स्विचेस को हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से पॉइंट को कैच करिएगा। सीरीज कनेक्शन ऑफ स्विचेस, इसमें क्या करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वी कनेक्ट मोर देन वन, वी कनेक्ट बेटा मोर देन वन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस almost of same switching frequency, almost of same switching frequency. Switching frequency is most important criteria before selecting your devices. Okay, switching frequencies. Okay, almost same switching frequencies. Okay, almost same switching frequencies. So we connect more than one power electronic devices in series. Okay, in series. Oh, when it will be useful, it will be useful, or this type of switch module will be useful. This type of switch module will be useful to improve voltage rating, और भी लिखना होता है बेटा voltage rating, और बड़ा सा, और we can make bipolar, that means beta device can block both voltages, positive and negative, okay, or we can make beta bipolar device, device. Okay, what is the meaning of bipolar? Not electrons, holes. These combination can block either positive voltage, either negative voltage, or both voltages. So this is the main advantage of series connection of the devices, or beta we can say, please mind it, or we can say series connection of switch module. Okay, or we can say switch module series connection. Now अगर इसकी बात को हम आगे बढ़ाएं तो we can say here beta we are having this one series connection of. Okay, इसके लिए हमने एक काम किया बेटा, we want to connect two devices in series like this. Okay, so try to understand like this, and I just want to give you something like this, one combination of this BJT. Okay, is the first choice. Second choice, I just want to tell you beta ji, we are having one SCR. Try to understand, we are having one SCR, or the second choice is this. Third choice is nothing but beta, we are having one IGBT in this fashion. Okay, and IGBT is also connected with series diode. Even IGBT having internal series diode. Okay, please keep in mind. Okay, next fourth beta, we want to consider some GTO. Okay, some GTO in this fashion. Okay, so this is nothing but GTO in series with diode. Okay, or my dear friend, fifth case, we may have one MOSFET in this fashion. Okay, in series with diode like this. Okay, and another beauty, we can consider trike also. Okay, so we can consider one trike also. So fifth and sixth position, we just want to draw one trike. Okay, so trike is something like this. Just give me a few seconds. Trike is something like this. Okay, so in series with some diode. Okay, in series with some diode. So these are the some possible beta switch module in the series connection. Okay, obviously this is not switch module, this is just one SCR. Okay, but we want to achieve VI characteristic of all switch module, so I have considered beta all possible series connection, one device or more than one device. Okay, so see here. Now can you tell me the VI characteristic of all switch module? Yes, my dear friend, can you tell me the VI characteristic of all switches or switch module? See here, we are having SCR. What is the VI characteristic of SCR? Properly series connection को follow करिए. So first beta, VI characteristics of beta, we can say this one, second choice. Second choice is nothing but this one, SCR. So SCR VI characteristic, I think you are familiar with this. So VI characteristics of SCR, my dear friend, will look like this. So the VI characteristic of SCR is positive, negative V, and obviously positive current. Obviously beta positive current. So now the question raising here, अगर सर अपने पास SCR नहीं होता तो SCR की ही VI characteristic क्या दूसरे डिवाइसेस की हेल्प से हम अचीव कर सकते हैं?
क्या हम दूसरे डिवाइसेस की हेल्प से अचीव कर सकते हैं? तो नाउ बेटा वी हैव कंसीडर्ड दिस बीजेटी स्विच मॉड्यूल। तो अगला बेटा हम पहला पॉइंट लेते हैं, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड। हम अगला बेटा पहला केस लेते हैं, ये वाला, और इसको किया कॉपी, और यहां देखते हैं इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। सो फर्स्ट वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज बेटा एक्टिव स्विच मॉड्यूल और पैसिव स्विच मॉड्यूल। सर एक्टिव स्विच मॉड्यूल, व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग सर बीजेटी इन द सीरीज विद डायोड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, अगर हम इसके अक्रॉस एक Vm sin ओमेगा टी का वोल्टेज लगाएं, तो हमें यह पता है बेटा कि विदाउट ट्रिगरिंग दिस बीजेटी विल नॉट कम इनटू कंडक्शन। So see, let us consider BJT is off. We are not triggering. So off BJT will behave like open circuit, yeah, will offer high amount of resistance. Now another beauty, I just want to ask you here, beta, if we are having some BJT in this fashion, okay, and one diode somewhere here, beta, individual diode, individual BJT. See, if we apply here, beta, some Vm sin omega t, here also we apply some Vm sin omega t. Try to understand Vm sin omega t. What will happen? When we apply Vm sin omega t across the collector and emitter terminal of the BJT, BJT will not come into conduction without triggering, yaar. So if you are not providing base current, BJT will behave like an open circuit. So see, if IB equal to 0, my dear friend, this BJT will behave as an open circuit, and this entire voltage will appear across your BJT, Vm sin omega t. Now what about this diode, beta? The instant at which you will apply this positive voltage across diode, diode will be short circuited and will allow some current. Diode does not have a capacity to block positive voltage, but BJT can block this positive voltage. The series combination of both we can observe here. So the instant at which you will apply positive voltage across this beta, and you are not triggering your BJT, your BJT will block entire positive voltage. See, I just want to explain. Let us consider, beta, let us consider base current IB equal to 0 ampere. So guaranteed BJT will be off. BJT will be off. Hopefully you are getting my point. BJT क्या हो जाएगा बेटा? BJT will be off. Very nice. Now see, next point. In this situation, the V of BJT, the voltage across BJT, the V of BJT is nothing but beta Vm sin omega t. See here, diode cannot block any positive voltage, so the diode voltage Vd will be 0 volt in this case. बस ध्यान देना बेटा, you want to observe the voltage across 1 and 2, because this total arrangement is called switch module. So your switch module entire is going to be block your positive voltage if you are making base current of BJT equal to 0. So what should be the VI characteristics? Not BJT, not diode, with respect to terminal 1 and 2 will be is nothing but beta this one. तो अगर हम इसको देखें, so in this situation we have here beta positive voltage blocking capacity. No current, no negative voltage. Only we can block beta positive voltage. So this is the first thing of this switch module with respect to 1 and 2. So I just want to mention beta here voltage 1, 2 and current 1, 2. Now second possibility, check here beta. अगर आपने ये first case ले लेते हैं, second case I am writing here beta. So what is the second case यार? In the second case I just want to write IB is not equal to 0 ampere. That means we have triggered our BJT. अगर BJT को on कर दिया, BJT will be short circuit and this positive voltage your diode cannot sustain. So diode will also come into conduction. So the instant at which you will trigger your BJT and diode both will come into conduction simultaneously. So current will flow from terminal 1 to 2. See here. So now beta switch module 1 to 2 will behave like a short circuit. And here we are having some current I1 of 2. No voltage, no voltage. So voltage across this will be 0 volt. See here, in the open circuit case, BJT off, BJT will block entire voltage. So this system will behave like open circuit, so current will be 0. So that's why we didn't show any current beta in the VI characteristic of this switch module. We have shown only voltage. But once you trigger your BJT, now you are having some current. So what will happen in this case? In the second case, sir, no voltage, but we are having current. So positive voltage and positive current done. Now what about the last case? Last case is nothing but, my dear friend, we want to apply negative voltage. What will happen? Third case. See here beta, when this supply voltage Vm sin omega t will change its own voltage polarity after pi, this is negative, this is positive. See my dear friend,
BJT is not capable to block negative voltage. Hardly it can block 5 volt, 10 volt. But dear friend, this diode can block negative voltage. दूसरा point, if here negative, here positive, you trigger your BJT, still current will not pass. Reason, diode will not allow in this way. Diode will not allow. So what will happen? In the negative case, beta, V of BJT will almost be 0 and V of diode will be entire your supply voltage. तो negative voltage कौन block करेगा? Diode. यानी कि third case में अगर हम बात करें, when V12, that means supply voltage is less than 0, BJT and diode both will be off. And diode beta both are off. So in this situation, I of 12 will be 0 ampere. Next important point, V of BJT will be approximate 0 volt, whereas V of diode will be entire your Vm sin omega t, obviously negative voltage. Obviously beta negative voltage. Okay, Vm sin omega t. So now on this base, what we can say beta? We can say here now this switch module can block negative voltage. So plus V and minus V. Hopefully this thing is clear. Plus V and minus V. इतनी बात भी clear है बेटा to everyone? Yes, बोलते रहे. इतनी बात भी clear है बेटा? Minus V and plus V. माइनस वी एंड प्लस वी, इतनी बात क्लियर है ना. अब देखो यार सर, जो एससीआर ने काम किया था, वो काम तो हमारे बीजेटी और डायोड ने भी कर दिया. तो सर एससीआर की नीड क्या है? अरे पगलेट, इतना समझो, डायोड और बीजेटी की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कभी एक नहीं हो सकती. हाँ, कोशिश कर सकते हैं, अबाउट वेरी क्लोज. दूसरा पॉइंट, एससीआर की जो वोल्टेज रेटिंग है वो इन दोनों की भी मिला के वोल्टेज रेटिंग उतनी नहीं होगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो एससीआर इज स्टिल सुपीरियर देन दिस स्विच मॉड्यूल. But yeah, sometimes if we require high switching frequency, then this switch module far better than that. Okay, SCR, because here you can easily control your turn on and turn off time. Hopefully the things are clear. ठीक है? Now बेटा, अब मेरा क्वेश्चन ये आया कि सर अगर अपने पास ये वाला स्विच मॉड्यूल होता तो क्या VI कैरेक्टरिस्टिक बनती? अरे सेम यार, देखो यहाँ पे बेटा, आओ सेम बनती. इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं एक एक करके. तो देखो बेटा, इसकी क्या बनती? आईजीबीटी की. ध्यान से समझो, आईजीबीटी सेम यार, सेम सर, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स. आईजीबीटी और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड सेम सर. दिस वन, सी, करंट कैन फ्लो ओनली इन सिंगल डायरेक्शन. इधर से करंट अलाउ नहीं है. एंड आईजीबीटी इज कैपेबल टू ब्लॉक पॉजिटिव वोल्टेज, स्मॉल नेगेटिव वोल्टेज. डायोड कैन ऑल्सो ब्लॉक नेगेटिव वोल्टेज. सो दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सेम. आगे बढ़ो सर, इसमें आओ, लेट मी कॉपी दिस वन. ओके, आगे आए सर, इसको देखते हैं, इसकी क्या VI कैरेक्टरिस्टिक होगी. देखो बेटा, एससीआर और डायोड करंट कैन पास ओनली सिंगल, सॉरी, जीटीओ एंड डायोड करंट कैन पास ओनली दिस टर्मिनल टू दैट टर्मिनल. डायोड कैन ब्लॉक नेगेटिव वोल्टेज, जीटीओ कैन ब्लॉक नेगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव वोल्टेज. सो द VI कैरेक्टरिस्टिक अगेन सेम. इन सभी की VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बेटा? सेम. इसकी भी. Now MOSFET पे आओ. MOSFET beta will allow current in bidirectional way, but this diode will not allow reverse current ना, तो unidirectional. MOSFET can block positive voltage, diode can block negative voltage. So the VI characteristic of this switch module will also be this one. Now beta, next, trike and diode. Yeah, definitely trike is bipolar bidirectional. But the thing is that this diode will not allow current in reverse direction. So again, the VI characteristics is beta this one. Okay, see properly. तो कोई भी arrangement हो इनमें से, you can easily handle VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज कनेक्शंस. होपफुली आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, होपफुली आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. नाउ बेटा आगे बढ़े. नेक्स्ट पॉइंट वी वांट टू डिस्कस पैरेलल कनेक्शन ऑफ द स्विच मॉड्यूल. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, वी वांट टू डिस्कस parallel connection of switch module. But before that, I just want to ask beta, draw the VI characteristic of switch module. Okay, so I just want to consider one example. Draw VI characteristics. Draw VI characteristic of given ideal switch module. Of given ideal beta switch module. Of given ideal switch module. Okay, what are those switch module? जितने भी दिए जा रहे हैं आपको, पहला बीजेटी, बहुत ध्यान सुनना, एंड एंटी पैरेलल डायोड. ओके, दूसरा बेटा ध्यान से समझना, बीजेटी एंटी पैरेलल डायोड. सेकंड बेटा मॉसफेट, ओके, लाइक दिस. थर्ड बेटा मॉसफेट लाइक दिस. ओके, ऐसे. अगला बेटा फोर्थ वन, IGBT
IGBT with series, sorry, with this parallel. Okay, this. नेक्स्ट बेटा फोर्थ हो गया। फिफ्थ वन, सभी की आपको VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। फिफ्थ वन SCR एंटी पैरेलल डायोड। ओके, लाइक दिस। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ, सिक्स वन GTO। ओके, GTO with anti-parallel diode like this. Okay, 7 बेटा थी, BJT हो गया, MOSFET हो गया, IGBT हो गया, SCR हो गया, GTO, ट्राइक। ओके, सो ट्राइक का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके, ऑब्वियसली नहीं होगा, सो ट्राइक नो नीड टू कंसिडर। एंड एनी अदर डिवाइस, या वी कैन ड्रॉ एनी अदर possibility. Yes, no, we don't have. So we are having beta 6 switch module. Okay, so this IGBT parallel with this single MOSFET, MOSFET anti-parallel with diode, IGBT anti-parallel with diode. Okay, and this SCR anti-parallel with diode, GTO with anti-parallel with diode. So we have to draw VI characteristic of ideal switch module, all these switch modules. So we are having switch module. What will be the VI characteristic of this? Please tell me fast. क्या आंसर होना चाहिए? कुछ कहना चाह रहे हैं सर? दिस सर अभी से पढ़ा है सर, P वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा चलिए, थैंक यू बेटा, इतनी बात क्लियर है, आप ही से पढ़ा है। ओके, चलिए इतनी बात क्लियर है बेटा। फटाक से देखिए, ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिवन आइडियल स्विच मॉड्यूल। टेक अराउंड बेटा 2 मिनट्स और सोच के मुझे बताइएगा किसकी VI कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी। ओके, सो टेक अराउंड बेटा 2 मिनट्स, टेक अराउंड बेटा 2 मिनट्स, प्लीज स्टार्ट योर जॉब। क्या आया आंसर बेटा? पैरेलल ऑफ स्विच मॉड्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेलल ऑफ स्विच मॉड्यूल, ठीक है, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है, सब कुछ बढ़िया है। ओके, हल्का सा कोई बताया करे तो यार पता भी चले, ऐसे तो पता ही नहीं चलता है। खैर अभी तक मेरे हिसाब से क्लियर है बॉयस। एक उठाते हैं बेटा, ये मुझे बताइए, बहुत ध्यान से सुनना। वी वांट टू ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू स्विच मॉड्यूल फर्स्ट। ओके, इनको पहले उठाते हैं फिर देखते हैं आगे, ठीक है। सो VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज टू स्विच मॉड्यूल, तो यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे। फर्स्ट बेटा वी वांट टू डिस्कस स्विच VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्विच मॉड्यूल, थर्ड वन। ओके, चलिए शुरू करें। एवरीवन टेल मी, देखो ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, बट वी आर नॉट ट्रिगरिंग दिस मॉसफेट, तो क्या होगा बेटा? सर मॉसफेट विल नॉट गेट टर्न ऑन, सो डेफिनेटली सर मॉसफेट विल पास दिस जीरो अमाउंट ऑफ करंट। ओके,
this one. Now sir, अगर यहाँ positive या negative है तो diode will be reverse bias. Diode will be reverse bias. Okay, see properly. This is the direction of sir electrons. तो current बेटा in this fashion will pass. So इसका मतलब अगर current trigger करे MOSFET को तो current pass होगी. अगर trigger ही नहीं किया तो बेटा voltage block होगा. So it can block बेटा voltage positive. पहला point. Now अगर इस positive voltage के साथ trigger कर देते हो तो current will pass. So positive current will be there. नेक्स्ट बेटा, अगर ये वोल्टेज पोलैरिटी नेगेटिव हो जाए लाइक दिस, सो डायोड विल कम इनटू कंडक्शन, सो नेगेटिव करंट विल आल्सो बी देयर. यानी कि इस टाइप के जो स्विच मॉड्यूल हैं इन्हें बोलते हैं बाई डायरेक्शनल एंड यूनिपोलर. Bidirectional and unipolar. This terminal is 1, this terminal is 2. So you can write I12 and V12. Hopefully you are getting my point. Clear है बेटा? Okay, मैं नहीं कहूंगा आपसे शेयर और लाइक करो, है ना, बस हो गया, जितना बोलना था बोल दिया. आई थिंक दीज पॉइंट्स आर क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचे बेटा, इस पे आओ. सर इसकी क्या होगी? सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही होगी कि नहीं होगी, कोई बताए मुझे बेटा. सेम कैरेक्टरिस्टिक विल बी देयर और नॉट. देखो ध्यान समझो बेटा, अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज लगा दें यहां पे तो मॉसफेट ट्रिगर नहीं किया तो पॉजिटिव वोल्टेज विल ब्लॉक, सही बात है. अगर ट्रिगर कर दिया तो पॉजिटिव करंट विल पास, ये भी सही बात है. व्हाट अबाउट नेगेटिव करंट, विल पास और नॉट? अरे रुको रवि सर, आप कंफ्यूज नहीं कर सकते. हमें पता है कि अगर मॉसफेट का बॉडी डायोड दिखाया जाए तो भी एक ही बात है और नहीं भी दिखाया जाए तो भी बात एक ही है. ओके, सो इनहेरेंटली दिस मॉसफेट हैविंग दिस बॉडी डायोड, तो दिस बॉडी डायोड जो अच्छी नजरें रखते होंगे उनको दिखाई देगा, उनको दिखाई देगा. ओके, तो चाहे मॉसफेट का प्रेजेंटेशन ये हो या फिर मॉसफेट का प्रेजेंटेशन बेटा ओनली पिंक कलर हो, ये वाला, इन बोथ केसेस द वीआई कैरेक्टरिस्टिक विल बी एग्जैक्टली सेम. क्योंकि समटाइम प्रोफेसर विल शो यू बॉडी डायोड, समटाइम प्रोफेसर विल नॉट शो यू बॉडी डायोड, बट इन बोथ केसेस द वीआई कैरेक्टरिस्टिक विल बी एब्सोल्युटली सेम. इतनी बात क्लियर है? will be absolutely same. Okay, आगे बढ़ते हैं बालक. Now next part बेटा we want to handle this IGBT. इसकी सर VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, जरा ध्यान से समझो. पॉजिटिव वोल्टेज दिया, IGBT डॉन ट्रिगर, ब्लॉक पॉजिटिव वोल्टेज, ट्रिगर करंट डाउनवर्ड, नेगेटिव वोल्टेज डायोड ऑन. सो सेम VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वन आल्सो. सो सेम बेटा VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वन आल्सो. जरा ध्यान दीजिएगा, दिस वन आल्सो. एक मिनट रुकिएगा बेटा, यहां से कर लेते हैं इसको छोटा, दिस वन. ओके, नाउ आगे बढ़े. इसमें डन हो गया, ये डन हो गया. इसमें आओ बेटा, IGBT पॉजिटिव वोल्टेज दिया, विल नॉट ट्रिगर. ओके, पॉजिटिव वोल्टेज दिया एंड वी आर नॉट ट्रिगरिंग, पॉजिटिव वोल्टेज ब्लॉक, ट्रिगर किया करंट डाउनवर्ड, अदरवाइज अपवर्ड. ओके, नाउ अपवर्ड पास होगी कि नहीं ये नहीं पता. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा. इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट. It's really very interesting story behind it. We know that beta every IGBT having series connection of diode. Every IGBT having series connection of diode. So now that diode जो सीरीज में लगा रहता बेटा, इस कनेक्शन के तौर पे वो यहां लगेगा और ये इसको रिवर्स कर नहीं, सॉरी ये इसके करंट को ब्लॉक कर नहीं सकता. तो इसका मतलब अगर हम IGBT के सीरीज डायोड को कंसीडर भी कर लें तो वो तो यहां लगा होगा बेटा, अगर नहीं दिखाया गया तो, और ये डायोड बाहर लगा हुआ है तो करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी या ऊपर से फ्लो हो जाएगी. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? So in this case again we are having this characteristics. लेकिन अगर कोई ऐसा कह दे कि IGBT का सीरीज डायोड बेटा यहां है और देन ये अपना IGBT है और यहां पे कहीं अपना एंटी पैरेलल डायोड लगा है, तो फिर क्या होगा सर? रिवर्स करंट विल नॉट अलाउ इन दैट सिचुएशन. सो इन दैट सिचुएशन बेटा वी आर हैविंग पॉजिटिव वोल्टेज एंड पॉजिटिव करंट एंड बेटा नेगेटिव वोल्टेज. तो ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ आपको ऐसी दिखेगी, समझिएगा इस वाले के लिए. तो ये एक अलग पॉइंट है. ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा. नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस वन यार, SCR. तो देखो बेटा, पॉजिटिव वोल्टेज दिया, SCR नॉट ट्रिगरिंग, तो पॉजिटिव वोल्टेज ब्लॉक. नाउ SCR ट्रिगर, डाउनवर्ड करंट, नेगेटिव वोल्टेज, डायोड ऑटोमेटिकली ऑन. सो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर हैविंग हियर आल्सो. अच्छा, यहां पे आओ, GTO एंड दिस डायोड, पॉजिटिव वोल्टेज दिया नॉट ऑन, ट्रिगर सॉरी पॉजिटिव वोल्टेज दिया नॉट ट्रिगरिंग, नॉट ऑन, ट्रिगर कर दिया ऑन, करंट डाउनवर्ड, पॉजिटिव वोल्टेज ब्लॉक, नेगेटिव वोल्टेज दिया, डायोड ऑन. सो दिस VI कैरेक्टरिस्टिक विल आल्सो अपीयर हियर. सो दीज आर द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल स्विच मॉड्यूल इन द पैरेलल कनेक्शन. अभी बताइए क्लियर है? यस एवरीवन, टेल मी फास्ट. सो दिस इज द स्विच मॉड्यूल थ्योरी. अब हम क्वेश्चन लेंगे स्विच मॉड्यूल के और स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के इन द टुमारो सेशन. चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क माय डियर फ्रेंड. कैन यू टेल मी हाउ वाज द सेशन? कैसा लगा आपको? सारा ब्रश अप हो गया, सारे पॉइंट, सारी चीजें. ओके, now beta I just want to again suggest you, if you are aspirant of GATE 24 and 25, then please don't provide any delay.
Okay, to take paid subscription of GATE Adda247 for EC, electrical, civil and mechanical all branches, you can use my code dear friend Y503 for best discount and best mentorship. Okay, चलिए ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। नाउ हाउ टू बाई कोर्स अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मैं उसके लिए भी आपको ले चलता हूं, बट उससे पहले एक माइक्रो सेकंड आपके लिए कीमती है गेट 2023 के स्टूडेंट के लिए, तो वो लोग अपना बेटा काम करते रहे, है ना। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जस्ट टाइप करिएगा गेट अड्डा 24/7। जैसे गूगल पे टाइप करेंगे गेट अड्डा 24/7, आपको बेटा ऐसा एक पेज मिल जाएगा। ओके, ऐसा नहीं मिलेगा, मैं बताता हूं शुरू से कैसा मिलेगा आपको। गेट अड्डा 24/7 का पेज मिल जाएगा, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड। ओके हाँ, हो गया। तो यहां पे ऑल कोर्सेज ऐसे पेज खुलेगा, ऑल कोर्सेज के ऑप्शन पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज बेटा गेट ईएससी के ऑप्शन पे जाएंगे, यहां से आपको गेट ईएससी का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ये पेज खुला आप देखेंगे तो सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है। ओके, नाउ व्हाटएवर कोर्स यू वांट टू बाय यू कैन टेक। ओके, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स पे क्लिक किया बेटा, एंड ऑलरेडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट रनिंग कंडीशन में है जो खत्म होने जा रहा है। इसके बाद नेटवर्क स्टार्ट होगा। अब कोर्स प्राइस आप देख रहे होंगे 23,000, लगभग 24,000 मान लेते हैं, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है क्योंकि मैं खड़ा हूं ना अभी यहाँ पे। तो पे करने के लिए आपको बाय नाउ पे जाइए, नाउ यूज माय कोड Y503। जैसे आप बेटा यहाँ पे टाइप करोगे Y503, नाउ सी दिस कॉस्ट प्राइस। ओके, सॉरी ये आ गया इसके सामने। सो नाउ इट इज 5500 ओनली। तो 5500 रुपए में आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है टू कंप्लीट योर सिलेबस एट टाइम। ओके, डेफिनेटली ऑल सिलेबस या और सब्जेक्ट के लिए वी आर गोइंग टू बी प्रोवाइड क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड पीडीएफ, वी आर प्रोवाइडिंग टू बुकलेट एंड सो ऑन। तो कहीं से भी आपको वरी करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू स्विच मॉड्यूल यू कैन डेफिनेटली आस्क, और ये जो पीडीएफ है बेटा इसकी मैं इस सेशन में पिन करवा दूंगा। सो उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। कल हम बात करेंगे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की और इसके साथ बात करेंगे स्विच मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस की। ओके, सेशन विल टेक अराउंड बेटा 90 मिनट्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे चॉपर वगैरह में। हाँ, कल एक चॉपर का भी एक डाउट सेशन है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक